Welcome to this episode of Acutalk. I am very happy to announce that this is the 24th Acutalk session that we are conducting, and each and every Acutalk session has been unique. We make it a point to present very interesting topics, practical experiences, and all that is useful to make your practice successful. Today's subject is, in fact, a very important subject, and yet I was surprised that it is not mentioned very regularly or in many places. Liver yang rising is such a powerful concept that it can transform how you look at acupuncture. Now, today we will be discussing on this topic, and I have with us my colleague and friend Vivek ji. Vivek ji is a senior acupuncture practitioner. He is practicing for about 35 years, and I would say in a very Mumbai style language कि ये भी एक एक्यूपंक्चर के बहुत बड़े कीड़े हैं. वो बहुत ज्यादा एक्यूपंक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड नॉट ओनली दैट, ही इज आल्सो इंटीग्रेटिंग many natural treatment modalities. He does sound therapy, he does even hypnosis, and he even does radionics. Okay, plus many other protocols. So he has a lot of practical experience to share with us. Now, before I give over the proceedings to Vivek ji, let me give you a brief introduction to liver yang rising as a background to it. All right. So, when we look at the health and illness scenario, we find that 90% of illnesses are self-induced. 90%. And only 10% illnesses occur due to constitutional causes. That means 10% of sick people are born with illness due to genetic issues. Okay, so they are of a separate category, but 90% of people, they fall sick due to faulty lifestyle, due to stresses, and due to mismanagement of various small problems that occur. Please remember this. And when I was reading Liver Yang Rising in detail, even I was surprised to know that why this topic has not come to the forefront as it should have been. We often ignore it and sometimes not even remember it. And you will be more surprised to know that out of the 90% of the sick people, which I just mentioned, 90% who are sick due to their mistakes, out of that, most of them, okay, are due to liver yang rising. Liver yang rising can give so many chronic problems that you will be shocked. Diabetes, migraines, neck problems, spinal problems, liver problems, shoulder problems. The list is endless. Even vision disturbances, ear disturbances. You will be surprised to what this liver yang rising, the damage it can do. So before we sort of introduce this subject, let us first hear our friend Vivek ji. Vivek ji, I pass on the host to you. You can introduce the topic
and then share your PPT. You have about 15-20 minutes. That's okay, right? Okay. Yeah. And then we'll have question and answers. All right. Yes, please. Thank you, Go sir. ahead. Go ahead. Okay. Friends, नमस्कार. हम लिवर यंग राइजिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. लिवर यंग राइजिंग डिस्कस करने के पहले हम कुछ लिवर के बारे में जानें. एज पर टीसीएम, सो लिवर के पैटर्न्स क्या है, लिवर के उसके प्रॉपर्टीज क्या है, लिवर के प्रॉपर्टीज क्या है, ये शायद सब बहुत लोगों को पता नहीं रहेंगे. तो हम पहले लिवर की प्रॉपर्टीज समझे. लिवर यंग राइजिंग समझने के पहले हम लिवर के प्रॉपर्टीज समझे. ओके. तो लिवर, पहली बात तो लिवर डिटॉक्सिफाइंग एंड स्टोरिंग ऑर्गन है. और लिवर स्टोर 1.5 लीटर्स ऑफ ब्लड. सबको मालूम है लिवर स्टोर ब्लड. कितना ब्लड रहता है? 1.5 लीटर ब्लड. लिवर हाउसेस द इथेरियल सोल. Liver open to sides. Okay, so it is the sense organ of the liver is the eye. Manifest in the nails. Okay, नाखून देखने से लिवर की कंडीशन समझती है. Controls and motion sinews and tears. Controls and motion sinews and tears. Okay, liver blood regulate menstruation and regulate blood volume in relation to rest and activities. आपको पता है, जब हम रेस्ट में रहते हैं, जब हम सोते हैं, तो ब्लड लिवर में रहता है. जब हम एक्टिविटीज में रहते हैं तो ब्लड पेरीफेरी में जाता है, ऑर्गन में जाता है. So it's regulate blood volume in relation to the rest and activities. Liver dislike wind. Liver notice wind. So, and liver ensure smooth flow of chi in the body. Liver planning and sense of direction in life. Liver controls spleen. Spleen is controlled by the liver. And liver controlled by lung. Liver is the mother of heart and liver is the son of kidney. Affected by anger. Liver is always affected by anger. And elements is wood. Energy, what is the energy of liver? Wind. And emotion, liver emotion is the anger, reasoning structure, originality, and the idea. Color of the liver, green or blue. Taste, sour. Smell, rancid. Sound, shouting. Always, if your patient comes to you and talking with the shouting, so understand its constitution is the liver. Okay, patterning organ, gallbladder, pair organ, gallbladder.
and timing as per organ clock 1 a.m. to 3 a.m. Now, importance of the liver in gynecology. Liver ensure smooth flow of chi. Okay, impaired function if this smooth flow of chi, that function, if there is an impaired, so there is the PMS, premenstrual syndromes, including depression, irritability, and distension in the breast. Liver chi stagnation. It is the horizontally rebellious that invades spleen and prevent spleen chi from ascending. Okay, spleen always ascend. So it's prevent spleen chi from ascending. So results are the prolapse of uterus and prolapse of the organs. Dampness in the liver channel. If there is the dampness in the liver channel, greenish vaginal discharge. अब पारंपरिक चीनी चिकित्सा पारंपरिक चीनी चिकित्सा पीसीएम में लिवर एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी जिम्मेदारी केवल डिटॉक्सिफिकेशन तक सीमित नहीं है। यह शरीर में ची और ब्लड के प्रवाह को नियंत्रण करता है, भावनाओं को संतुलित करता है, रक्त को संग्रहित करता है और स्नायु और आंखों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, लीवर से जुड़ी असंतुलन की समस्याएं आमतौर पर भावनात्मक तनाव, खराब आहार और जीवन शैली से जुड़ी होती है। यह टीसीएम के अनुसार लीवर से संबंधित प्रमुख रोग पैटर्न्स हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सो पहला पैटर्न है लीवर का पैटर्न क्या है? लीवर ची स्टैग्नेशन। उसके कारण भावनात्मक तनाव, क्रोध, निराशा और खराब आहार। आपका स्क्रीन शेयरिंग चला गया है। हाँ, तो अभी 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 कुछ नहीं है। अच्छा, मैं बात करूंगा। ओके। ओके, हाँ। तो और नंबर दो पैटर्न है। देर आर द 7 पैटर्न इन द लिवर। सो देर इज द 2 is the in pattern and the 5 are the yang patterns. So first pattern is the liver chi stagnation. Okay. And second pattern is the liver blood deficiency. लिवर ब्लड डिफिशियंसी का कारण क्या है? अगर रोग पुराना रोग रहेगा और खराब पोषण और रक्त की हानि रहेगी तो लिवर ब्लड डिफिशियंसी का कारण बनता है। नंबर 3, लिवर यंग राइजिंग। यह हमारा विषय है, लिवर यंग राइजिंग। उसके कारण क्या है? लंबे समय तक लिवर इन या रक्त की कमी। नंबर 4, लिवर फायर ब्लेजिंग। ये सब यंग पैटर्न्स है। लिवर फायर ब्लेजिंग, इसका कारण क्या है? अत्याधुनिक भावनात्मक तनाव, रोज शराब ये बहुत बड़ा कारण है, और तीखा खाना। बहुत से फैमिली में खाना तीखा ही चलता है, लेकिन वो कारण बनता है लिवर फायर ब्लेजिंग। नंबर 5, लिवर इनडिफिशियंसी। इसके कारण पुरानी बीमारी,
अधिक परिश्रम और बुखार की बीमारियां वो जो इन को कंज्यूम करता है। अगर बुखार आता है तो इन कंज्यूम होता है। नंबर 6, लीवर ब्लड स्टैसिस। इसके कारण लंबे समय तक ची का ची स्टैग्नेशन, ची का ठहराव लंबे समय तक, और ट्रॉमा, चोट। नंबर 7, लिवर विन का आंतरिक रूप से उग्र होना। सो लिवर यांग से विन उत्पन्न होता है। लिवर फायर से विन उत्पन्न होता है। लिवर ब्लड की कमी से विन उत्पन्न होता है। अब आइए सीखिए लिवर यांग राइजिंग। हमारा मुख्य विषय है लिवर यांग राइजिंग, जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा टीसीएम का एक सिद्धांत है। इसे सरल हिंदी में समझाते हैं। दोस्तों, लिवर यांग राइजिंग क्या है? लिवर में दो तरह की ऊर्जा होती है। एक इन वो शांत ठंडी ऊर्जा। इन ये शांत और ठंडी ऊर्जा, और दूसरी है यांग, गर्म और सक्रिय ऊर्जा। सामान्य रूप से लिवर यांग ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, लेकिन जब लिवर इन की कमी हो जाती है या यांग बहुत अधिक हो जाता है तो ये असंतुलन पैदा करता है। इस स्थिति को लिवर यांग राइजिंग कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? नंबर 1, लिवर इन की कमी। जब इन कमजोर होता है तो यह यांग को नियंत्रित कर नहीं पाता। सबसे बड़ी समस्या लिवर इन की कमी। नंबर 2, गर्म पदार्थ का अधिक सेवन। शराब, मसालेदार भोजन और गर्म प्रकृति वाले पदार्थ यांग को बढ़ाते हैं। नंबर 3, क्रोध और तनाव। गुस्सा और तनाव लिवर ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलते हैं। गुस्सा और तनाव। नंबर 4, किडनी इनकी कमी। किडनी इनकी कमी। किडनी और लिवर का संबंध होता है। क्या संबंध होता है? मदर एंड सन। ओके, किडनी इज द मदर एंड लिवर इज द सन। इसलिए किडनी इनकी कमी से भी लिवर यांग बढ़ता है। अब इसकी पहचान कैसे करें? लिवर यांग राइजिंग कैसा होता है, क्या है, इसकी पहचान कैसे करें? अगर किसी को लिवर यांग राइजिंग है तो लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला लक्षण है सिर दर्द। आमतौर पर सिर के एक तरफ या कनपटियों पर तेज दर्द, थ्रोम्बिंग पेन होता है। आंखों में दर्द, आंखों के पीछे भारीपन या दबाव महसूस होना, चक्कर आना, कानों में आवाजें, टिनिटस, और सुनाई कम देना। जैसे मयंक सर जी ने बोला है, और जो कान के लिए भी लीवर जिम्मेदार होता है। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और इमीडिएट जल्दी गुस्सा आना, नींद न आना, ओके, इंसोम्निया, नींद न आना, आवाज तेज या कठोर लगना। उनको तेज आवाज या कठोर आवाज बेयर नहीं होता है, सहन नहीं होता है। मांसपेशियों में तनाव, स्नायु में तनाव,
ओके, मसल्स में तनाव, आंखों में कठोरता और लालिमा, ओके, रेडनेस इन द आई, जीभ के किनारे लाल हो सकते हैं। अगर आप टंग देखेंगे, हाँ, तो लिवर यांग राइजिंग में जीभ के किनारे लाल रहते हैं। और नब्ज तनी हुई वायरी पल्स हो सकते हैं। अगर नब्ज चेक करेंगे तो वो वायरी पल्स हो जाए, मिलेगी आपको। इलाज और बचाव के उपाय क्या है? पहला उपाय है एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर के बिंदु, पॉइंट्स क्या होते हैं? तो पहला पॉइंट है लीवर थ्री। लीवर थ्री क्या करता है? यांग ऊर्जा को नीचे लाने और इनको मजबूत करने के लिए काम करता है। LI4 एंड लीवर थ्री फोरगेट, ये फोरगेट जोड़िए, LI4 एंड लीवर थ्री बायलैटरल, लीवर को शांत करने के लिए और ची फ्लो को सुधारने के लिए। बाद में ट्रिपल ऑर्मर 5, GB20, GB21, GB38, GB43, UB20 एंड ब्लैडर 18। ये पॉइंट सिर से यांग को नीचे लाते और लिवर को संतुलित करते। अब नंबर 2, जीवन शैली में बदलाव करना जरूरी है। तो क्या करना है? गुस्सा और तनाव को कम करें, ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाए। योगिक ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग करते हैं, मालूम है? जैसा बच्चा ब्रीथ करता है, उसका ब्रीथ करते समय टमी ऊपर आता है, ब्रीथ छोड़ेंगे एक बार टमी नीचे आता है, और बच्चों को ऑब्जर्व करो। हाँ, वैसा आप ब्रीदिंग टेक्निक, योगिक ब्रीदिंग आप अपनाइए। भोजन पर ध्यान दें, मसालेदार तला हुआ भोजन मत ले और शराब से बचे, खासकर रेड वाइन। रेड वाइन खतरनाक है, वो यांग को बढ़ाता है। व्यायाम करें, हल्का व्यायाम और योग लिवर को संतुलित कर सकता है। ठंडे और शीतल पदार्थ लें, हरी सब्जियां, खीरा, कुकुम्बर, काकड़ी, तरबूज और नारियल पानी, ये लिवर यांग के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लिवर यांग राइजिंग एक असंतुलन है जो गुस्से, तनाव, गलत खान पान और गलत जीवन शैली से हो सकता है। इसे संतुलित करने के लिए एक्यूपंक्चर, सही आहार और शांत रहने की आदतें अपनानी चाहिए। यदि लक्षण गंभीर हो तो किसी विशेष तज्ञ से परामर्श लेना बेहतर होगा। जैसे कि मयंक सर से परामर्श ले लो, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा आपको। तो यही है योर यंग राइजिंग। नमस्ते। Thank you, Vivek ji, for your wonderful presentation. Now, before we go ahead with some more information, let me ask all of you a question. And whosoever gives the best answer will get a surprise prize from ASP. According to you, which is the most common reason that you see in day-to-day life which can lead to liver yang rising? I want you to punch the answers in the chat box. Let me see
who gives the best answer. Okay, what is the most common thing in day-to-day life, and it is not anger, that can cause liver yang rising? Please write in your answer. And it is very common, okay, very common, and people don't know about it. So people are writing, and till then, let me also give you some additional information. Vivekji mentioned 7 liver syndromes, 2 yin, 5 yang. But I would say that the base is liver yang rising, and the top is liver fire blazing. Everything else comes in between. These are the two most important polarities. Okay, so liver yang rising, and when I give you the answer to the quiz, you will understand why I'm giving emphasis to liver yang rising. Liver yang rising is the cause of almost every chronic illness you see in a day-to-day life, and hence it is very important. So we have a very close differentiation when we say liver yang rising. Okay, essentially the blood in the liver, either it is less, or the yin of the liver is very weak, or even the kidney yin is weak. Okay, these are the three main causes why the yang goes up, because yin is less, yang goes up. Now what happens is, anger and all that, okay, there is always a question whether the anger comes first, or because the liver yang is rising, you get angry. That is a very important question that you have to understand. I feel that because the liver is disturbed, the person is angry. Okay, so we have to read between the lines. And in the 5 element theory, everything begins from wind. Everything begins from the liver wood element. That is how important it is. And even on the yin channel, the first point is wood. All right. So give importance to liver yang. Now, let me give you the answer to the quiz. There are, Vivekji, 57, 58 replies have come in. So 60, they are pouring in. Okay, let me see. Food habit, negative thoughts, emotional stress, poor sleep, yin deficiency, tea, more use of vision, sleep not enough, overthinking, lifestyle stress, non-acceptance. आपने तो सारा कुछ लिख दिया है. All right, but there is one answer which is correct, and you will see that answer on the screen, and I will share it to you. If you go to a restaurant, or if you are eating at home, how many of you eat your food by keeping quiet? Or do you always talk with others? सामने वाला है, ये है, वो है. All right. So the first important reason, right from childhood, we are trained not to concentrate on food, to concentrate on masti, मजाक, बात करो, ये करो, दारू पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, मिठाई खाओ, कुछ भी करो, लेकिन खाने पे कोई ध्यान नहीं देता है. And because you don't pay attention to food, liver yang begins to rise right from childhood. Good. There are a couple of people who do not talk. That's good. That goods. And so what it means is, right from childhood, you have started damaging your liver. And people who get angry, okay, now there is another aspect. There are many people who want everything their own way. मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए. The biggest problem in the world today,
children are not willing to listen to their parents. I want this, I will do this. I want this, I will do this. And even a small child, if you see, if you tell him, don't do this, he will do it. That is how the liver starts getting damaged. People, rather than becoming calm, they should become patient. They should have acceptance. They should develop respect. If they develop that, automatically the liver yang starts reducing. And liver yang is often confused with liver fire blazing. Okay. So, what is the difference between the two? Okay. So, I will not tell you the answer right now because we are conducting or about to conduct in a very short time a full workshop. It will be about 3 hours workshop where we will teach you liver yang syndromes in detail and how to manage it with what acupuncture points, etc., etc. And lastly, always remember acupuncture is about two things. One is patterns. You have to understand patterns of acupuncture. And secondly, you don't only go on points, okay? Okay, liver 3 is good, triple warmer 5 is good, UB is good, GB is good. That is okay. That is one way. But always talk about circuits. So, acupuncture, if you want to practice a higher level of acupuncture, practice learning patterns, practice learning circuits. Give points in a circuit, and that is very, very, very powerful. All this will be taught in our workshop, how to treat liver yang. And if you treat liver yang properly, you will be able to treat vision problems, ear problems, uh, neck pain problems, shoulder rheumatism, which is very common, frozen shoulders, etc. You will be able to even treat tennis elbow. You will be able to treat migraines, diabetes, dryness, and the list is very, very big. So, friends, liver yang rising is something which has to be paid attention to, and this is what is very, very important. And टेक होम वैल्यू इज, आज के बाद जब भी आप खाना खाने बैठो, बात मत करना, चुपचाप खाना खाना, फोकस ऑन योर फूड, एंजॉय द फूड, एंजॉय द टेस्ट ऑफ द फूड. आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिक, आप खाना चुपचाप खाएंगे तो आपका गुस्सा भी चुपचाप हो जाएगा, आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा. ऑल राइट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ the liver yang rising. We wanted to give you a small summary, and Vivek ji has done a wonderful job in summarizing the functions of the liver, in summarizing how the different syndromes are. So now we are open for questions. You can type in your question, or one by one you can raise your hand so that we can go through a few questions. Yes, please. You can unmute yourself and ask a question. Yes, please. Sir, good evening, sir. Yes. Sir, my question was, sir told कि liver 3 के points लेने हैं, LI4 लेने हैं, 4 gates लेने हैं, and then he turned to GB over there. So GB is the meridian where liver yang has raised over there. That's why to pull down it, he has taken the GB. This is my confusion a little bit. And he has taken more over the points on GB more over there. So I was a little bit confused over there. Hanji, Vivek ji, want to answer this? I not understood these questions. Acha, her question is that in the first place, we have liver yang rising. Okay. Yeah. Now, you have given a suggestion of some points on GB. Yeah. So GB also is a yang meridian. Yeah. Yeah. So how will you achieve
a balance of the liver yang rising by selecting points on GB. So when I talk about the GB point, okay, so first all points GB21, GB38, GB43. So we have to reduce energy. We have to sedate that energy. Okay? Okay. Ha. Yeah, all points should be sedation. Okay. Okay, that's why you have taken the GB meridian for Sir, can sedation you only. repeat the Yeah, point yeah. what you have suggested? You can listen to our recording later, please, for all that. Okay. All right. So the answer here is that GB is the yang meridian, but you can also sedate the yang meridian. Okay. GB yang है, लेकिन उसको sedate भी किया जा सकता है. All right. लेकिन आप 2 या 3 तरीके से रिजल्ट पा सकते हैं. इन एक्यूपंक्चर हमेशा याद रखो, आपको सारे सिम्टम्स देखने हैं. ओके. उसका पैटर्न बनाना है. सबसे पहले यही काम करो. एक पॉइंट, ये पॉइंट अच्छा है, ये लिवर 2 अच्छा है, लिवर 3 अच्छा है, वैसा आप मत करो. पैटर्न बनाओ. ऑल राइट. क्या क्या सिम्टम्स है आपको? जीबी के सिम्टम दिख रहे हैं, लिवर के सिम्टम दिख रहे हैं, स्प्लीन के सिम्टम दिख रहे हैं, लंग के दिख रहे हैं, किडनी के दिख रहे हैं. क्या दिख रहा है? क्योंकि क्रॉनिक इलनेस में कभी भी एक सिम्टम नहीं होता है. यू हैव मल्टीपल सिम्टम. समझो, अभी वन रीजन इज किडनी इन डेफिशिएंसी. किडनी इन डेफिशिएंट हुआ तो वो लिवर इन को भी डेफिशिएंट करेगा. लिवर इन डेफिशिएंट हो गया तो यांग बढ़ जाएगा. तो आपको किडनी ट्रीट करना है या लिवर इन ट्रीट करना है, आपको सिम्टम्स बताएंगे. Etiology समझो, etiology समझो. Etiology, patterns. All right. So always go on those lines and you will be successful. Yes, sir. Thank you. Thank you. Next question, please. सर यूवी का चैनल क्यों बता रहे थे, समझ में नहीं आया. यूवी से कंसर्न किधर है? हाँ, UB18 लिवर का बैकशू पॉइंट है ना. ओके. UB18 बैकशू पॉइंट है लिवर का. यस यस यस. हाँ. यस सर. एक्यूपंक्चर गूगली खेलता है, कहाँ कहाँ से बॉल फेंकता है और विकेट ले लेता है. सो अंडरस्टैंड कि लिवर इज योर फोकस, और सही में देखने जाए तो लिवर इज द मेन ऑर्गन इन द बॉडी. इट कंट्रोल्स एवरीथिंग. तो बैकशू पॉइंट ट्रीट करने से क्या होगा बताइए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकशू पॉइंट्स? फंक्शनल डिसऑर्डर को ठीक करता है. तो आप खुद जवाब दे रहे हैं. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Hello, यस प्लीज. sir. My question is, what is wiry pulse? Pardon? Wiry pulse. वायरी पल्स. Yes, sir. वायरी पल्स तो ऑनेस्टली बताया तो नहीं जाएगा, आपको देखना पड़ेगा. Yes, yes. हाँ, वो फील करना होता है. आप याद रखो, आप जब भी वायर को हाथ लगाते हो कैसे हार्ड और पतला फील होता है. ओके. तो वो वायरी पल्स आप जब भी फील करेंगे, आपको पतला पल्स और हार्ड पल्स फील होगा. ओके. ओके. वो आपको डायग्नोसिस में सीखना पड़ेगा. Yes, sir. वो प्रैक्टिकल लर्निंग है. यस. Okay, sir. All right. Any more questions, please? Last question we will take up. Sir, I want लिवर सीरोसिस के अंदर कुछ सजेस्ट करेंगे सर?
Sir, I wanted to ask the difference between, you said there is difference between liver yang rising and liver fire. So I also told you that this we will answer in the full workshop, okay? Okay. Not today. Okay. That is all that is left for the workshop. This is an introduction to the topic. Workshop will be online. 3 hours major workshop, okay? Master class, where you will master liver functions, liver yang rising, and how to treat the major illnesses in the body. Okay. Yes. Now, एक लास्ट क्वेश्चन है. डॉक्टर मंजरी पाठक ने गूगली क्वेश्चन भेजा है आपके लिए कि व्हाट इफ पेशेंट हैज फियर एंड एंगर बोथ, तो क्या करना चाहिए? See, liver, always liver is getting disturbed because of main thing, your suppressed emotion. Suppress your emotion, your suppressed anger, your suppressed revenge, your suppressed fear, okay? So your suppressed sorrow. So you should open up to everything, okay? सब अगर किसी को के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकालो. अगर किसी को मारने का दिल करता है तो मारो, तो सामने मारो नहीं, ऐसा मत बोलो. पिलो 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 पकड़ के मारो. हाँ, अगर अगर आपको डांस करना चाहता है, हाँ तो डांस करो. अगर हंसना चाहता है तो हंसो, अगर रोना चाहता है तो रो जाओ. Don't suppress. हाँ, don't suppress your emotion. And one more thing, आप देखोगे कि जिसको भी अधिक गुस्सा है, गुस्से के भीतर में आपको हमेशा डर मिलेगा. Fear is the mother of anger. Kidney is the mother of liver. So जो गुस्से वाले हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं, वो क्रिमिनल क्यों होते हैं? उनके अंदर इनसिक्योरिटी, डर होता है. और डर को छुपाने के लिए वो गुस्सा करते हैं. ऑलराइट, तो ये सब आप याद रखिए. आपके अंदर का डर निकाल दीजिए, आपके अंदर का लिवर यांग राइजिन को ठीक कर दीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे. ऑलराइट, so let us conclude the session for today. Okay, so I hope all of you have enjoyed today's Acutalk, which is the series 24. And I sincerely thank our colleague Vivek ji for his wonderful presentation, and we will invite him again in the future so that he shares his experience with all of us and we can learn more and more. Thank you, Vivek ji. आपको और कुछ बताना है? नहीं, बस हो गया. बस हो गया. आज के लिए काफी हो गया. All right. Good night, everyone. Done for the day.